Hello everyone. Today's topic is Hess law of constant heat summation. Okay. Now what does this law states? It states that enthalpy change means देखो अगर कोई भी reaction हो रही है, right? If it is proceeding from A to B means directly जो A reactant है वो B में change हो रहा है, right? And the enthalpy change in this reaction is delta H, right? So this is the one way by which we can get the product B from A. Okay, there may be another way through which we can get our product B from A, right? Means that way can be, firstly when reactant A is changing to C, then this C changes to B. This is another way by which we can get the product B from the reactant A. So enthalpy change in this first step is delta H1, enthalpy change in this second step is delta H2. But if our reactants are same in both the reaction, as we are proceeding this reaction only by another way, right? Means ये एक reaction को होने का this is one way, और इसी reaction को हम another way से carry out करते हैं जिसमें हमारे पास जो B product है वो B product तो बन रहा है but we are getting another product in between of them. ठीक है, मीन्स यहाँ पे ये एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी, यहाँ पर ये रिएक्शन दो स्टेप्स में, फर्स्टली A to C देन C to B, यहाँ पर ये रिएक्शन दो स्टेप्स में हो रही है. ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप में इंथैल्पी चेंज हो रहा है दैट इज डेल्टा H1 और जो सेकंड स्टेप में इंथैल्पी चेंज हो रहा है दैट इज डेल्टा H2. ठीक है, क्योंकि हम इसी रिएक्शन को सेकेंड वे से कर रहे हैं. ठीक है, तो जो हमारे पास टोटल इंथैल्पी होगी दैट विल बी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, और ये इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों इंथैल्पीज का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू दिस डेल्टा H. Okay, now see that enthalpy change in particular reaction is same whether reaction takes place in one step or in a number of steps. ठीक है ना, हम अगर उन्हीं रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवा के हमें वही प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है ना, जो एक रिएक्शन की हमने हमें बी प्रोडक्ट ही चाहिए ए रिएक्टेंट से. ठीक है ना, यहाँ पे हम वी हैव प्रोसीडेड द रिएक्शन बाय वन वे, हियर वी हैव यूज्ड अनदर वे, राइट? मींस चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो चाहे वो रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो. ओके, जो इंथैल्पी चेंज होगा इन द पर्टिकुलर रिएक्शन इट विल रिमेन सेम. जो इंथैल्पी चेंज यहाँ पे होगा और जो इंथैल्पी चेंज यहाँ पे होगा इन दोनों को ऐड करने के बाद, दैट इंथैल्पी चेंज इन द पर्टिकुलर रिएक्शन इज सेम. वो इंथैल्पी चेंज क्या होगा, सेम होगा, फिर चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो चाहे एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो, राइट? सो हियर दिस इज द एग्जांपल जो आपको दे रखी है, A to B बाय पाथ 1. ठीक है, और अगर हम A to B जाएँ सेकेंड वे से, वो सेकेंड वे क्या होगा, पहले A to C फिर C to B. Okay, here is the example I will show you. Now example is the formation of CO2. ठीक है ना, CO2 की फॉर्मेशन की बात करेंगे, राइट? फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन को यूज करके CO2 की फॉर्मेशन होगी. ठीक है ना, और वो दो वेज जिनसे CO2 की फॉर्मेशन होगी वो दोनों वेज यहाँ पर डिस्कस कर रखी है. ठीक है, if 1 mole of carbon is reacting with 1 mole of oxygen then it will give us carbon dioxide and the enthalpy change of the reaction will be minus 393.5 kilojoule. Right, now another way is that firstly we are reacting carbon with half mole of oxygen and we get carbon monoxide. We are getting carbon monoxide, CO, and then further second step CO, this carbon monoxide further reacts with half mole of oxygen, then it gives CO2, and here the enthalpy change is नेगेटिव ऑफ 283.0 किलोजॉल. मीन्स देखो यहाँ पे CO2 फॉर्म हो रहा है डायरेक्टली कार्बन अलॉन्ग विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिविंग CO2. हियर फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन वी आर गेटिंग CO2 बट वाया 2 स्टेप्स, राइट? सो फिर जो हमारे पास अभी इंथैल्पी चेंज होगा वो इंथैल्पी चेंज किसकी इक्वल होगा, इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप एंड इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग सेकेंड स्टेप, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड. So then the enthalpy change will be negative of 110.5 plus negative of 283.0, right? So solving this we'll get the energy equals to minus 393.5 kilojoule, and this is the enthalpy change when we
proceeded the reaction by path 1, there also the enthalpy change that we get is minus 393.5 kilojoule, and when we proceeded the reaction by 2 steps, then also we get the enthalpy change to be minus 393.5 kilojoule. Okay, means this is Hess law, right? Either the reaction, हम अगर एक ही तरह का प्रोडक्ट हम फॉर्म कर रहे हैं बट अलग अलग स्टेप्स अलग अलग वेज से कर रहे हैं, ठीक है ना, देन जो इंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी सेम. हमने यहाँ पे एक स्टेप में किया तब भी इंथैल्पी चेंज उतना ही आया माइनस 393.5, और यहाँ पे हमने 2 स्टेप्स में CO2 की फॉर्मेशन की तब भी जो इंथैल्पी चेंज हमारे पास टोटल आया दैट इज माइनस 393.5, राइट. मीन्स सो जो इंथैल्पी चेंज होगा दैट विल रिमेन सेम, ईदर द रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू 1 स्टेप और इट प्रोसीड्स थ्रू 2 स्टेप्स और 3 स्टेप्स. Okay, so this law, from this law we also find that जो heat evolve होगी means जो भी heat change होगा that just depends upon the enthalpy of reactants and the enthalpy of products. ठीक है ना, मीन्स जो हीट चेंज होगा वो सिर्फ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की ही इंथैल्पी पे डिपेंड करता है. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड्स, राइट. सो डेल्टा एच इक्वल्स टू enthalpy change of first step, enthalpy change in second step और in third step, means जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स में वो रिएक्शन हो रही है हर स्टेप में जो इंथैल्पी चेंज होगा उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दैट विल गिव अस द टोटल इंथैल्पी चेंज. ओके, नाउ थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन टू द हेस लॉ. ठीक है ना, हमने देखा कि अगर A to B बाय पाथ 1 जा रहे हैं देन इंथैल्पी चेंज इज H, डेल्टा H, एंड हीट चेंज इज Q, right. And if we proceed through second way, then enthalpy change in here will be delta H1 और जो enthalpy change यहाँ पे होगा वो होगा delta H2, and heat change is Q1 and here it is Q2, right. means जो second step में हमारे पास total heat change आ रहा है that is Q1 plus Q2, let it equals to Q dash. ठीक है ना, Q नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो पाथ 1 में इंथैल्पी चेंज है और यहाँ पे Q डैश ले रखा है. अगर हेस लॉ फॉलो होता है तब हमारे पास क्या होगा, Q एंड Q डैश ये दोनों इक्वल आएंगे. अभी हमने यही चीज़ प्रूव करनी है कि जो जिस भी नंबर ऑफ स्टेप्स के थ्रू हमारे पास जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो उसमें जो हीट चेंज होगा वो क्या होगा, सेम होगा. ठीक है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट पाथ जो पाथ 1 से रिएक्शन हो रही है वहाँ पे हीट कितनी ले रही, Q, and the heat evolved or heat change that happens during the path second, let it be Q dash, and Q dash equals to Q1 plus Q2, and according to Hess law Q dash and Q, these both should be equal. But if we suppose that Q dash is greater than Q, ठीक है, मीन्स इन दोनों में से हमने क्या लेट कर लिया कि ये जो सेकेंड पाथ से रिएक्शन हो रखी है वहाँ पे जो हीट चेंज हो रहा है दैट इज ग्रेटर दैन Q. ठीक है ना, मीन्स अगर हम सेकेंड पाथ से A to B जा रहे हैं देन द हीट चेंज इज Q डैश, एंड इफ वी आर प्रोसीडिंग थ्रू पाथ 1 देन द हीट इज Q, हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इज Q, राइट. इट मीन्स देयर वी कम अक्रॉस द हीट एनर्जी डिफरेंस. यहाँ पे कुछ डिफरेंस होगा, अगर Q डैश Q से ज़्यादा है तब हमारे पास जो हीट चेंज होगा दैट विल बी Q डैश माइनस Q. ठीक है ना, मीन्स वहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एनर्जी डिफरेंस आ रहा है. बट according to the law of conservation of the energy can neither be created nor be destroyed, just can be converted from one form to another. So here this much amount of energy difference is created, so that is not possible according to the law of conservation of energy. So this confirms that Q dash is equal to Q, means वो चेंज नहीं है, एक रिएक्शन हो रही है डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेप्स के थ्रू हो रही है. सो देन जो हीट चेंज होगा दैट विल नॉट बी डिफरेंट, दैट विल बी इक्वल. अगर वो डिफरेंट होती हैं ठीक है ना, तब हमारे पास हीट चेंज कुछ ना कुछ आएगा, और वो हीट चेंज अगर आता है देन दैट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो देन इट कन्फर्म्स दैट कि जो हमारे पास हीट चेंज हो रहा है इधर बाय पाथ 1 और बाय पाथ 2 इन दिस रिएक्शन इज सेम, राइट. सो Q dash equals to Q, means heat change during the process is independent of the path पे, चाहे हम जितने मर्जी number of steps के through that particular reaction goes on, but the heat change remains the same. Now the next topic is applications of Hess law. Okay, now means where this law is used. When do we calculate the enthalpy change via Hess law, right? So this law is useful in determining the enthalpy changes for those reaction
in which we can't measure the enthalpy change with the help of calorimeter. मीन्स यहाँ पे हम कैलोरीमीटर को नहीं यूज़ कर सकते हैं इंथैल्पी चेंज फाइंड करने के लिए. एट दैट टाइम वी फाइंड द इंथैल्पी चेंज वाया Hess law. Okay, at that time we use Hess law to find the enthalpy change where calorimeter does not work. Right, so first application is to find the enthalpy of formation of the substance which can't be measured experimentally. मीन्स जिनको हम कैलोरीमीटर की हेल्प से एक्सपेरिमेंटली जिन रिएक्शंस की इंथैल्पी चेंज नहीं फाइंड कर सकते, नाउ वी कैन फाइंड द इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दोज सब्सटेंसेस बाय Hess law. Right, example over here is that like some of these compounds, carbon monoxide or methane or benzene, these can't be synthesized directly from the elements. Right, means इनको हम directly synthesize नहीं कर सकते, so we can't measure their enthalpy change by calorimeter method. So there we use the Hess law to measure the enthalpy change, as we have to find the enthalpy of formation over here. So that's why the symbol here is used is delta H, enthalpy change, or enthalpy of formation it is, that's why F is written over here. Right, so now enthalpy of formation we have to, I'm taking an example of carbon monoxide. Right, I'm taking example of carbon monoxide of which I have to find the enthalpy of formation. Right, so carbon when reacts with 1 mole of oxygen, I already told you what does it gives. It forms carbon dioxide and the enthalpy change here is minus 393.5 kilojoule. Right, and when carbon monoxide reacts with half mole of oxygen, it gives carbon dioxide. Right, and here the enthalpy change is minus 283.0 kilojoule. Right, but here I have to find the enthalpy of formation of carbon monoxide. Right, मीन्स मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड की जो इंथैल्पी चेंज है वो फाइंड करनी है. राइट, सो व्हाट आई विल डू, आई विल सब्ट्रैक्ट दिस सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन. मतलब ये जो थर्मोकेमिकल इक्वेशंस होती हैं, दीज इक्वेशंस दीज कैन बी एडेड, दीज कैन बी सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाइड. जैसे हम मैथ्स में अलजेब्रिक इक्वेशंस करते हैं ना, इन दैट मैनर वी कैन सॉल्व दीज इक्वेशंस. वी कैन ऐड देम, वी कैन सब्ट्रैक्ट देम, वी कैन मल्टीप्लाई देम. Okay, so here I'll subtract this second equation from the first equation. Okay, right side में से right side subtract होगी and from the left side I'll subtract the left side. So carbon plus oxygen. So now subtracting equation 2 from equation 1. हमारे पास equation 1 है carbon plus 1 mole of oxygen. I'll subtract this equation. So minus CO minus of half O. Here CO2 and here also CO2, so this side I'll get nothing. Right, here carbon is here and then 1 O2 and half mole of O2 is here, so 1 minus half I'll get plus half mole of oxygen, and then here it is minus of CO, I'll take it to right side, there it will change to plus CO. So means the reaction that becomes over here is carbon plus half mole of oxygen giving carbon monoxide. राइट, एंड द इंथैल्पी चेंज विल बी लाइक दैट. ठीक है ना, मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन 1 में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट किया. राइट, सो यहाँ पे भी क्या होगा, minus 393.5 then subtracting minus 283.0. Right, so on solving that, the enthalpy change that I'll get over here is minus 110.5 kilojoule. So means this is the way, if calorimeter or means experimentally we can't find the enthalpy of formation, then by using Hess law means एक reaction को different number of steps in which that can proceed by writing that different steps and the enthalpy change which is taking during that. So then solving that equations we can find the enthalpy of formation or any enthalpy that we have to find. Right, so this is the first application where we find the enthalpy of the formation which otherwise can't be found experimentally. Right, so this is formation of carbon dioxide by 2 steps, means this is by one way, this is by another way. Then subtracting that both equations, I'll get one equation where I get the formation of CO and then it gives us the enthalpy of formation. Right, now second application is that we can find the enthalpy of transition. Now what is transition? Transition means change. When if
any of the substance changes from one state to another state. Enthalpy of transition can be like when solid changes to liquid, when liquid changes to gas, right? Or when solid changes to directly to gas, right? Means these different steps. These changes when physical state of one substance changes to another, right? Here the enthalpy of transition that is discussed is related to allotropes. Allotropes, like there are different allotropes of carbon, means which is made up of carbon only, like example is diamond, graphite, right? Buckminster fullerene, which is C60, right? These are the different allotropes of the carbon, right? So this law is helpful in determining the enthalpies of the transition of the allotropic modification. Means if we have to find from graphite to diamond, or if we have to find the enthalpy change of the allotropic modification of phosphorus from yellow phosphorus to red phosphorus. Okay, now here the example of allotropes of carbon, right? So combustion, and I have taken the enthalpies of combustion. Enthalpies of combustion of diamond and graphite. When carbon of diamond undergoes combustion, then the enthalpy change is minus 395.4 kilojoule. And when enthalpy change which takes place during combustion of carbon of graphite, the enthalpy change is minus 393.5 kilojoule. Right? Now I'll subtract these two equations. From first I'll subtract the equation number second. Right? So here carbon of diamond, right? I'll write over here carbon of diamond plus O2 minus carbon of graphite minus O2, and on that side it is CO2 minus CO2, right? So here this oxygen and this oxygen, it will cancel out. Here I am just left with carbon of diamond, and here it is carbon of graphite with negative sign, and on changing to right side it will get into positive sign. So there I get carbon of diamond which changes into carbon of graphite. As I had subtracted these two equations, so this enthalpy change will also get subtracted, and the change in enthalpy that I'll get when carbon of diamond it changes into carbon of graphite. Means when allotropes of carbon changes from diamond to graphite, then the enthalpy change which will take place is minus 1.9 kilojoule. So Hess law is also helpful in finding the enthalpy change of transition. Right, when one state changes to another, or when one type of allotrope changes into another type of allotrope, then the type of then enthalpy change that will take place is found by the help of Hess law. Okay. Now third application is that it is helpful in calculation of the enthalpy of the hydration. Enthalpy of the hydration is what? It is that enthalpy change when 1 mole of the anhydrous salt. Now what is anhydrous salt? Where is means that particular substance has no molecule of water. Anhydrous means वहाँ पे उस molecule के पास water molecule नहीं है उस substance के पास, ठीक है. Anhydrous substance it combines with the required number of moles of water and it forms hydrated salt. यहाँ पर हमारे पास simple copper sulfate है and no water molecule is attached with that. But when molecules of water are made to react with copper sulfate, then it forms copper sulfate where 5 molecules of water get attached to it. This is anhydrous copper sulfate where no water molecule is attached, and here this is hydrated salt where copper sulfate is attached with 5 molecules of water, and this is known as water of crystallization. It is also known as water of crystallization. Right? So when 1 mole of an substance it reacts with required number of, means these are specific moles. जो water of crystallization है इनकी जो numbering होती है that is specific. Okay, means particular that copper sulfate may react with 5 moles of water and it forms copper sulfate along with 5 molecules of water, and the enthalpy change taken is this much. So enthalpy of hydration when molecule react with anhydrous molecule reacts with required number of moles of water, at that time the enthalpy change which is taking place can be found with the help of Hess law. Now here is one numerical, that standard enthalpy of formation of SO2 and SO3, right? Means when sulfur reacts with oxygen and forming SO2,
देन सल्फर रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग SO3. एट दैट टाइम जो इंथैल्पी चेंजेस हो रहे हैं दैट इंथैल्पी चेंजेस आर गिवन. ओके, बट वी हैव टू फाइंड दिस इंथैल्पी चेंजेस फॉर द रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड विद हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गिविंग SO3. हमने इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जो इंथैल्पी चेंज होगा वो फाइंड करना है, राइट. सो हियर द इक्वेशन दैट आई विल गेट, this is the equation which we are given, and these are the two equations of which they had given the enthalpies. So what I'll do, I'll subtract these two equations, right? Subtracting this equation from equation second. Equation second is sulfur plus 3O2, right? Then subtracting this equation, sulfur plus 1O2, right? So here I'll get sulfur plus 3O2 giving SO3, then sulfur plus 1O2 giving SO2. Subtracting both equations, जैसे हम ऐसे भी अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, राइट. इनका साइन चेंज कर दिए, इट कैंसल्स आउट, एंड दिस 3O2 minus 1O2 it will change into half O2, then SO3 minus SO2, right. Here SO2 is with the negative sign, so I'll take it to that side. So sulfur dioxide plus half oxygen is giving sulfur trioxide. So similarly, subtracting the values of their enthalpy change, I'll get this value. So in this way we can find the enthalpies of formation or enthalpies of transition or enthalpy of hydration, which otherwise can't be found with the help of calorimeter. So we can use the Hess law over there to find these enthalpy changes. Okay, thank you.